So hello guys, welcome to Manoeuvre Education. So this video is all about Maharashtra MCACET 2022. So basically in this video I will discuss exam to admission complete process. एग्जाम से लेके एडमिशन तक के जो भी प्रोसेसेस है लाइक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फाइनल इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस होगा ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. एंड वेरी सुन वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीईटी सेल जो है वो एमसीए सीईटी 2022 को लेके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगी. ऑलरेडी फार्मेसी, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और इंजीनियरिंग ये चार जो कोर्सेस है इनको लेके रजिस्ट्रेशन आ गया है. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एमसीए सीईटी इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम जिसका डेट सबसे पहले आता है. Okay, and if you want to prepare for MCA CET, so we have launched the batches for Maharashtra MCA CET and NIMCET. So in this batches you will get live class as well as classroom coaching. Also we have started books, ebooks facilities are also there, shortcut trick, doubt classes are there, recorded videos will be there, topic test, mock test, WhatsApp group will be made where all the queries of yours will be solved by our faculties. 10,000 plus question for the practice purpose and mentorship by our exam mentors. So what are you waiting guys? Book your seat now. Call on 8828581455 or you can also visit to our website manoeuvreedu.com/MCA entrance. Now guys, let us start with first examination process of MCA CET. So Maharashtra MCA CET examination process. So very first it will come online application form will out. Approx 25 days to 1 month का विंडो होता है फॉर दी एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है. एप्लीकेशन फॉर्म रीओपनिंग. नाउ एप्लीकेशन फॉर्म रीओपनिंग क्या होता है कि मेनी ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि एक्सटेंशन भी देते हैं सीईटी सेल. ओके, एक वीक का एक्सटेंशन भी दिया जाता है अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है या कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है. सो दे गिव एक्सटेंशन फॉर 1 वीक. ओके, आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म एडिटिंग भी होता है. रीओपनिंग के साथ साथ फॉर्म एडिटिंग के भी ऑप्शंस CET सेल ओपन कर देती है बिकॉज इफ there is a exam center issue, if you are not getting exam center nearby at your place, so you can edit your form, photo, name, these all things. If it is not properly filled, then form editing will be there, so you can do application form editing. After this, issue of hall ticket. Okay, so admit card आपका आ जाएगा, hall ticket आ जाएगा, which on that your examination center, date of examination and timing of the examination, what are the things you need to carry during the examination, all these things you have to take with you. Okay, and the final is exam day, the D-day. So after issuing the hall ticket, exam day will come and you have to give the examination. And last is result announcement. So around 15 to 20 days later, examination result will be announced. All the examination process is the computerized based. Okay, CBT mode based test होता है. So result अनाउंस करने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. रिजल्ट अनाउंसमेंट लास्ट प्रोसेस होता है MCA CET के एग्जामिनेशन प्रोसेस में. नाउ गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, MCA CET का एडमिशन प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, बिकॉज वी आर गिविंग एग्ज़ाम for the admission in the MCA colleges. Okay, so now let us discuss about the MCA CET admission process. MCA CET admission process is also called as cap round, that is centralized admission process, and there are few steps into that which you need to follow for the admission into MCA colleges. So these are the steps. First is the online registration for the admission. This is 1 month window will be there, and where you have to register in the cap round. Okay, and then document, you have to upload document verification hoga, that is called as e-scrutiny. Okay, display of provisional merit list. Okay, why provisional merit list? Because if document verification is not there, then आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एंड उसमें दिखाया जाएगा कि आपके किस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है. एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट, ग्रीवांसेस, सबमिशन ऑफ ग्रीवांसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट. ओके, तो देन यू हैव टू सबमिट द ग्रीवांसेस एंड CET सेल विल वेरीफाई इट and then final merit list declared by CET cell. Now over here you will see there are two types of merit list, provisional merit list and final merit list. Final merit list ही आपको consider करना है. Okay, now cap round 1. Okay, reporting to the allotted institute. After the merit list, cap round 1
और आपको जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किए थे आपको वो कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सबमिट दी डॉक्यूमेंट्स, ओके, एज वेल एज पेमेंट, ओके। तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट कैप राउंड 2 विल स्टार्ट। सेम प्रोसेस जैसा कैप राउंड 1 में हुआ था, ओनली यू डोंट हैव टू रजिस्टर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर इन द कैप राउंड प्रोसेस। यू हैव टू सिलेक्ट दी कॉलेजेस जिसमें सीट्स बचे हुए हैं आफ्टर दी cap round 1. So display of provisional vacant seats for the cap round 2 and after that online submission and confirmation of option form of cap round 2. Whatever colleges you have selected in the cap round 2, you have to confirm that college, okay, and then display of provisional allotment of cap round 2. Again display होगा provisional allotment because अगेन सेकेंड टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होता है, दैट इज वाई प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल बी गिवन टू यू। आफ्टर दिस there is a accepting to the offered seat by the candidate. This is the cap round 2 का एडमिशन प्रोसेस जहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना पड़ेगा और वो कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन। यहाँ पे एंड ऑफ कैप राउंड 2 हो जाता है, ओके। नाउ थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, कैप राउंड 3। Whenever there is a vacant seat in the government aided college and in the unaided college, that is nothing but private college, so institutional round will be there and you have to apply to that particular institute and vacant seat report also will be declared by CET cell, okay, किस पर्टिकुलर कॉलेज में वैकेंसी है, सो यू कैन अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड इन दैट कॉलेज। सो आई होप आपको एग्जाम से एडमिशन तक का प्रोसेस MCA CET का क्लियर हो गया रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र MCA CET फॉर ईयर 2022 and 23, so you can join our online and live classes. You can call to our board line number 8828581455. You can also visit to our website. And if you want classroom coaching, so we have classroom coaching at Mumbai. Our branches are at Borivali, Vasai and Dadar, okay. You can also visit to our website manoeuvreedu.com/MCA entrance. You can also follow us on our social media handles for exam updates and notification. We have also launched a new YouTube channel which is very specific for MCA entrance. All the program links I have given into the description, as well as free counseling link also I have given into the description. So you can fill that form and our team will contact you and they will explain all the details about Maharashtra MCA CET. This is all about in this video. Hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to our channel, prepare well. All the best for your preparation. Thank you.